थिंक आपने कैट दे दिया, बट कैट देने के बाद अच्छे स्कोर के बाद ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आईएम अहमदाबाद से कॉल आएगा। यू हैव लेट्स से ABC, पर सबकी पहली प्रायोरिटी जो है वो अहमदाबाद होता है। तो वो क्या चीज है हमें, वो जो सिलेक्शन, जो सेकंड राउंड सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैट इज द फर्स्ट थिंग, बट उसके अलावा दे लुक एट द प्रोफाइल, तो व्हाट दे नीड टू डू अगर उनको, इफ दे हैव टू मेक इट टू आईएम अहमदाबाद व्हेन इट कम्स टू सेकंड राउंड ऑफ प्रिपरेशन। I wish there was any set list here because unlike CAT, in which you can either get an answer right or wrong in interviews and in real life, there is no such thing. So I don't have anything that यही होगा. But the thing is, the good thing is you've made it. CAT is a method of elimination. कि उनको 2 लाख में से they have to now shortlist 1200 for IMA specifically, right, to call. So you made it. Now it's a process of rejection. Now they will look for what is not working in the candidate. Like they will look for ways to select. So having said that, during the interview, it can go either way, right? Just don't think of this as an IMA interview. There is no script that the people have. Like it's usually professors or in other IIMs. I know that there are also alumni. So they are also humans. They take about 20 interviews a day. They get bored, right? Matlab any human would. So they would want some, मसाला। like I can't find a better word. Exactly. That is what I was saying. So they want a flair, right? कि ये इसने करा क्या है? सिर्फ पढ़ाई करी होगा, पढ़ाई करी है तो पढ़ाई में कुछ इंटरेस्टिंग करा है. And it depends on what you bring to the table. Like Yeah. as you also, the first question you asked me was what? Introduce yourself, right? That is what will happen in most of the interviews. अब अगर मैं अपनी introduction में सिर्फ music की बात करता, then if we did not have an agenda here, then perhaps the direction would have gone into music. But since I spoke about IMA undergrad, that's where the conversation went. Similarly, it's where you drive the interview. Of course, there will be some checks if they want to check on something very particular, right? If you're an economic student, then they would want to deep dive into how much did you study. If you have an economics professor in the panel, then you're either very lucky or very unlucky, because if you know economics, then you're sorted, right? So on and so forth. It depends on where you drive the conversation. A few good things that you can look at is be very sure of what you've done in life. आपने अगर कोई सीवी बनाया है तो सीवी में क्या क्या डाला है आपको पता होना चाहिए, राइट? आप कुछ झूठ तो नहीं लिख रहे उस पे. दैट इज व्हाट एनीवन वुड चेक. एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन अंडरग्रेड. इफ यू वर्क, इफ देयर आर एनी हॉबीज और इंटरेस्ट, तो आप इसको कितना डीपली जानते हो. आर यू नॉट लाइंग अबाउट इट? एसेंशियली अबाउट लाइक डिफाइनिंग योरसेल्फ एंड आपके अंदर डेप्थ कितनी है एज अ पर्सन. आर यू नॉट लाइंग? वही चेक करेगा कोई भी इंटरव्यूअर, इन माय ओपिनियन. अगेन थिंग्स वुड वेरी, राइट? आप कितने कोरा पे पढ़ लोगे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, एंड दे विल बी वेरी डिफरेंट.